So guys, averages is a very important topic with respect to all your MBA entrance exams. Be it CAT, be it NMAT, SNAP, CMAT, CET, and all the exams. पिछले बहुत सालों में averages is one topic जो हमेशा एटलीस्ट एक क्वेश्चन उसमें से आया है. So even if you are appearing for just CAT or NMAT or SNAP, you should make sure that you are very thorough with this topic. सो दैट जो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसकी अश्योरेंस है दैट यू विल डू दैट करेक्टली, राइट. सो आज हम एवरेज का बेसिक्स डिस्कस करेंगे एंड एज वी मूव ऑन विद अदर लेक्चर्स वी विल ग्रेजुअली इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस दैट वी सॉल्व. सो आज लेट अस डिस्कस द बेसिक्स ऑफ एवरेजेस. What exactly is an average? So average is a term which we use in our daily lives. For example, on an average, you spend 3 hours on social media every week or every day. Every week is too less. Or for example, on an average, you've scored 8 on 10 in your last 3 semesters. Right? So ये जो term है average वो हम बहुत ही regularly, बहुत ही normal language में use करते हैं. तो ये average exactly क्या है? If we go by the formula, average is sum of all the values divided by the total number of values. Let us understand this with the help of an example. Let us say आप मंडे को 2 चॉकलेट्स खाते हो, ट्यूसडे को 4 चॉकलेट्स खाते हो, वेडनेसडे को 6 चॉकलेट्स खाते हो, थर्सडे को 8 चॉकलेट्स खाते हो और फ्राइडे को 10 चॉकलेट्स खाते हो. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आप these are the number of chocolates that you consume. What is the average number of chocolates that you consume across these 5 days? So the average number of chocolates you will consume is 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by 5. So average number of chocolates consumed each day over the 5 days is 30 divided by 5 which is equal to 6. ये है एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो आप कंज्यूम करते हो. सो ये काफी बेसिक फॉर्मूला है एंड इट विल ऑलवेज कम हैंडी व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इवन द क्वेश्चंस विद मॉडरेट डिफिकल्टी. सो कीप इन माइंड एंड दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज कम इन यूज. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस. The first property of averages says that for any set of values, the average for that particular set will always lie between the lowest value of the set and the highest value of the set. For example, same हम example लेते हैं. अगर हमारे पास 5 नंबर हैं 2, 4, 6, 8 और 10, उसका average हमारा 6 है, which is higher than which lies between smallest and the highest value. Now in any case, without exception, the average will always lie between the lowest value and the highest value. किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि एवरेज लोएस्ट वैल्यू से कम हो या हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा हो. भले ही हमारा जो सेट ऑफ नंबर्स है वो कितना भी स्क्यूड हो, मे बी द लोएस्ट नंबर इज 1 एंड द हाईएस्ट नंबर इज 1000, द एवरेज विल ऑलवेज लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स, राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एवरेजेस. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरेजेस. द सेकंड प्रॉपर्टी सेज that if all the values of a set are increased by a certain constant k, then the average of the set will also increase by that particular constant k, right? तो अगर हमारे सेट में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से इंक्रीज कर देते हैं तो जो एवरेज आएगा हमारा नया वो भी उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से इंक्रीज हो जाएगा. तो हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से लेते हैं. फॉर एग्जांपल, there are 5 shopkeepers who sell 10, 20, 30, 40 and 50 pens respectively each month. ठीक है? What if all the shopkeepers start selling 5 more pens in the next month or the current month? What will be the average number of pens sold by them? तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम अपना एवरेज निकालेंगे. इसका एवरेज हमारा आएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5
which is equal to 150 divided by 5, which is equal to 30. So initially in this case, the average number of pens sold by the shopkeepers per month is 30. Now the condition is, अगर सारे shopkeepers start selling 5 more pens in the current month, what will be the new average of number of pens? तो अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें करना पड़ेगा 10 plus 5, 20 plus 5, 30 plus 5, 40 plus 5 and 50 plus 5 whole divided by 5. ठीक है, तो हमारा पहले था 30, 1 2 3 4 5, तो हमारा नया एवरेज क्या होगा 15 plus 25 plus 35 plus 45 plus 55 whole divided by 5. हमारा आंसर आएगा 175 divided by 5, which will be equal to 35. अब हमने पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकाला है. अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी के साथ जाएंगे तो दिस शोज दैट आवर न्यू एवरेज इज ग्रेटर देन द ओल्ड एवरेज बाय 5, राइट? तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. So this is the second property of averages. Now third property of averages is also somewhat similar. So the third property says that if each value in the set is decreased by a certain constant k, then the new average comes out to be the old average minus that constant k. So if we take the same example, the shopkeepers are selling 10, 20, 30, 40 and 50 pence respectively each month. And and now for example they sell 5 pence less in the current month. Each shopkeeper sells 5 pence lesser in the current month. What will be the new average number of pens sold by all the shopkeepers? तो हमारा ओरिजिनल एवरेज क्या आया था 30 आया था. Now if each shopkeeper sells 5 pence less, तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए 30 minus 5 which is equal to 25. अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको. तो अगर सारे शॉपकीपर्स 5 पेन्स कम सेल करेंगे तो 5 plus 15 plus 25 plus 35 plus 45 all divided by 5, which will come out to be 125 divided by 5, which will come out to be 25. तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई दैट आवर न्यू एवरेज इज 5 लेस देन द ओल्ड एवरेज. दिस वाज आवर थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. The fourth property of averages says that if each value of the set of numbers given to us is multiplied by a constant k, then the new average comes out to be the old average multiplied by the constant k. फिर से हम सेम एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास शॉपकीपर्स हैं 5 जो 10, 20, 30, 40, 50 पेन्स रिस्पेक्टिवली सेल करते हैं हर मंथ. तो हमारा एवरेज इसका आया था 30. Now if each shopkeeper starts selling twice the number of pens as they was earlier selling, what will be the new average? So by going by this property, our new average should be 30 into 2 because वो twice the number of pens sell कर रहे हैं, which will be equal to 60. Now let us verify this. तो हमारे पास नया सेट क्या आ जाएगा 20 plus 40 plus 60 plus 80 plus 100 divided by 5, which is equals to 300 divided by 5, which is equals to 60. तो हमारा जो न्यू एवरेज है that is 60, it is the old average multiplied by the constant k, जिससे हमने सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है. So our new average is 60. Hence this property is also verified. Now the fifth property, on the similar lines, says that if every
value of this set of numbers given to us is divided by a certain constant k, then our new average will be 1 by k times the old average. Same example लेंगे, हमारा इसका average था 30, this is our old average. Now for example, all the shopkeepers start selling half the number of pens that they were earlier selling. What will be the new average? Going by the property, the new average will be 1 by 2 of 30, which is equals to 15. अब हम वेरीफाई करेंगे, हमारे पास नया सेट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25 whole divided by 5, 75 whole divided by 5, which is equals to 15. So it is verified that a new average is 1 by 2 times the old average. So these were the properties that we discussed today. In the next class, we'll discuss a couple of more properties, and then we'll move on to solving different questions from averages. So guys, keep practicing these properties and these questions. And if there's any doubt that you have, you can write it in the comments below, and I will try to cover each of your doubts. And thank you.